Hello everyone. Today's lecture is based upon chapter Heredity and Evolution of class 10th. Now before we begin with the explanation of the chapter, it is very important for you to know these important terms for the better understanding of the chapter. So let's first talk about genetics. Now this chapter, Heredity and Evolution, revolves around genetics. In this chapter, we'll talk about genetics. It's all genetics in this chapter. And what is genetics? The science of heredity and variation. Biology की वो branch जो heredity and variation में deal करती है, we call it genetics. Now if we say that genetics is the science of heredity and variation, then we need to know what is heredity and what is variation. So now heredity. Heredity is the transmission of characters or traits or features from one generation to the next generation. For example, there is some physical trait in your father, there is a physical feature in your father, and you also have the same physical feature in your body. So that is heredity because उस character का transmission हुआ from one generation to the other generation, from the parent to the child. So that is heredity. Now moving ahead, and we'll talk about variation. The difference among individuals of a species are called variation. Like human beings, we all are similar, but still we have some difference amongst us. हम same होते हुए भी different हैं. So that difference is variation. Suppose we are similar to our parents, but still we have some difference. हम उनसे थोड़े अलग भी हैं. So वो difference क्या होता है? That is variation. So same species के individuals में जो difference होता है, we call them variation. And how does variation occur? Variation actually occurs due to error in DNA copying. When sexual reproduction happens, what happens that जो genetic material होता है DNA, इसकी copying होती है and one copy is transferred to the next generation. Parent body से child की body में DNA transfer होता है, and that is how the progeny keeps on evolving. So what happens when this DNA copying phenomena is occurring? तो अगर exactly accurate DNA की copying हो जाएगी, then we'll not be the offspring will be clones. हम clones हो जाएंगे, हम different नहीं होंगे, exact copies हो जाएंगे अपने parents की. But we are not like that, we are different. So ये क्यों होता है? Because DNA copying में error हो जाता है. DNA copying exactly accurate कभी नहीं होती है. In our cases, variation occurs and it occurs due to error in DNA copying. And variation helpful भी होता है. Variation helps an organism in evolution. किसी भी species के evolve करने में, evolution में, उसके better organism बनने में responsible होता है variation. So difference among individuals of a species is known as variation. Why it occurs? It occurs due to change or error in DNA copying. And variation helps an evolution of species to become a better organism. ये किसी भी species के evolution में help करता है so that the species becomes a better organism. Now we'll come across two terms, genotypes and phenotypes. What is genotype and what is phenotype? The genetic constitution of an organism or the genetic makeup of an organism, that is known as genotype. Suppose there is a tall plant, so we'll say capital T is the genetic combination जो उसके लिए responsible है. So that is genotype, and the tallness, that is phenotype. Phenotype means the outward expression of a gene which is in the form of physical appearance or behavior pattern. जब कोई जीन अपने आप को character के form में express करता है in the form of physical appearance, then we call it phenotype. और genetic constitution है तो genotype. Now we'll talk about it within few seconds. Now we'll talk about alleles. Now before that you need to know what are genes. Genes are the unit of heredity जो किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर कोई भी कैरेक्टर, कोई भी फीचर हमारी बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है, उसके लिए एक पर्टिकुलर जीन है जो उसके लिए एंजाइम्स बनाता है, जो उसके लिए कोड करता है, और जब वो एंजाइम फॉर्म हो जाती है तब वो कैरेक्टर हमारी बॉडी में एक्सप्रेस होता है. तो इट्स ऑल अबाउट जीन. नाउ जीन के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एक ही जीन के दो अलग अलग फॉर्म्स जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए कोड करते हैं, हम उसे एलील बोलते हैं. So the different forms of the same gene which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. Suppose height is a character. Height एक character है, उसके लिए दो contrasting traits है, tallness और dwarfness. Now height के लिए एक gene है I, और उस gene के दो alleles है.
कैपिटल टी जो टॉलनेस के लिए कोड कर रहा है एंड स्मॉल टी जो ड्वार्फनेस के लिए कोड कर रहा है. सो जीन आई के दो एलील्स हो गए, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. नाउ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर नॉट जीन्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स जो एक कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए कोड कर रहे हैं. Okay, now let's talk about dominant gene and recessive gene. Dominant gene and recessive gene क्या होते हैं? The gene which expresses itself लाइक कैपिटल टी एंड कैपिटल टी जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ प्रेजेंट होते हैं, सो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, दोनों जीन्स एक साथ एक्सप्रेस नहीं होते हैं. अमंग द टू जीन्स ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. सो द वन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं. मीन्स वो डोमिनेट कर जाता है. इन अ ग्रुप two people are present together. Okay, now among the two only one is dominating and the one who is dominating will express and the one which is not dominating will not be able to express itself. So the same is happening here. The gene which expresses itself and suppresses the expression of the other gene उसे हम dominant gene बोलते हैं. एक ग्रुप में दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो एलील जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है और दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है उसे हम डोमिनेंट जीन बोलते हैं. एंड द रिसेसिव जीन इज द वन विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. जो जीन अपने आप को डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसे हम रिसेसिव बोलते हैं. नाउ इन मेनी बुक्स इट इज रिटन दैट रिसेसिव जीन इज द जीन विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ. दिस इज रॉन्ग. रिसेसिव जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बट अगर वो डोमिनेंट जीन के साथ प्रेजेंट है तो वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता. सो रिसेसिव जीन इज द जीन विच कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. I know the basic difference. I hope the basic difference between dominant and recessive gene is clear now. Moving ahead, dominant gene आपको जो dominant gene है that appears in more number in a population. जो dominant character होगा that will be seen more. So it appears in more number and recessive gene it appears in less number. जो recessive character है वो less quantity में observe होता है किसी भी population. For example, tallness and dwarfness. तो tallness ज़्यादा in a population you will see more number of individuals with the dominant character and less number of individuals with the recessive character. So let's have an example of dominant gene. Suppose in a plant there are two character. Plant height के लिए दो character है, tall plant and dwarf plant. So tall plant, the capital T is the dominant gene. ये dominant allele है, and the dwarf plant that is small t is the recessive gene or the recessive allele. Now seed shape के लिए there are two example. One is round seed shape and the other one is wrinkled seed shape. So the round one is dominant and the wrinkled seed is the recessive one. ज़्यादातर अगर pea seeds आप observe करेंगे so most of them are round, very few are wrinkled. And I already told you कि जो dominant gene है वो dominant character है that will appear in more number of individuals. ज़्यादातर हमें population study में dominant character observe होगा. It will be observed in more number of individuals and recessive character will appear in less number of individuals. So wrinkle seed हमें बहुत कम observe होते हैं, round seed बहुत ज़्यादा observe होते हैं. So I hope this phenomena of dominant gene and recessive gene is clear to all of you. Now moving ahead, we'll talk about homozygous and heterozygous condition. Homozygous and heterozygous conditions, when both the alleles of a gene are present together. जब दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं and they are similar, then that condition is known as homozygous condition. When both the alleles of a gene are identical or similar, then that condition is known as homozygous condition. Now you will be able to understand this thing with the help of example. Now suppose genotype ये है, किसी भी organism के लिए genotype हमारे पास ये आता है, that is capital T, capital T. So capital T में if you can observe capital T and capital T both are same. These are two alleles for tallness. So capital T दोनों same है, similar है, so ये homozygous condition हो गई. Now small t together, ये genotype combination में दोनों alleles same है, so this is which type of condition? Again homozygous condition. Now capital R for round seed shape. So round seed shape के लिए code कर रहे हैं दोनों ही, so they are similar, they are identical, so this genotype combination is which condition? Homozygous condition. Small r, again both the alleles are coding for wrinkled seed shape and दोनों ही same
सेम है, आइडेंटिकल है, so this is which condition? This is homozygous condition. Now it's just the opposite is heterozygous condition, when both the alleles of a gene are non-identical or dissimilar. जब एक ही genotype combination में दो alleles अलग अलग present होते हैं which are non-identical or dissimilar, then we call it heterozygous condition. So now suppose you have this combination, capital T small t. Now this genotype combination, you see both the alleles are different, capital T है, small t है, both are different, they are dissimilar. So this is which type of condition? This is heterozygous condition, जहाँ पे dominant वाला express करेगा and recessive वाला will not be able to express itself. The other combination is capital R small r. Now this will give you round seed shape. Now round seed shape में capital R and small r में which one will express? Capital R will express and small r will not be able to express itself. So again, this is which type of condition? Heterozygous condition, where the dominant one will express and the recessive one will not express. So basically हम यहाँ dominant और recessive नहीं study कर रहे थे. We were talking about the homozygous and heterozygous condition, when in a pair of genes two alleles are there and both the alleles are similar, that is homozygous condition, and when both the alleles of a gene are dissimilar, then that is heterozygous condition. Moving ahead, we will talk about Mendel. Now Mendel, Gregor John Mendel is the full name. He is known as father of genetics. Now there is a reason behind we call him father of genetics. Mendel को हम father of genetics इसलिए कहते हैं because he was the first one to introduce the concept of genes as a basic unit of heredity. Now he was the first person to say that ये genes ही heredity का basic unit है. Like we have studied in class 9 about cell, that cell is the basic unit of life. उसी तरह genetics की जो basis है, heredity का जो basic unit है, it's all about gene. It starts from genes. So who did that? Gregor John Mendel did that, and that is why we call him the father of genetics. And he conducted various experiments. उन्होंने बहुत सारे hybridization experiments conduct किए थे on pea plant Pisum sativum. So this is very important. Who is Mendel? Why do we call him father of genetics? Mendel is known as father of genetics because he was the first one to introduce the concept of genes as the basic unit of heredity, and he conducted many hybridization experiments on pea plant Pisum sativum. Now जो hybridization experiment Mendel ने conduct किए थे on pea plant Pisum sativum, on the basis of those experiment he gave 3 laws of inheritance. उन्हीं experiments के basis पे Mendel ने 3 laws दिए थे inheritance के. We'll discuss about it within few minutes. Let's move ahead and talk discuss why he selected pea plants. Why do Mendel select pea plant? Why he selected pea plant? There might be some reason that he only selected pea plant for his experiment. The first thing is that all the varieties have sharp contrasting character. पहला reason ये था pea plant को select करने का कि जो pea plant की varieties available हैं उन सब में sharp contrasting characters है. Means अगर हम height को ले लें, so height के लिए 2 characters available थे pea plant की variety में, either tall or dwarf. There was no medium heighted plant. तो हमेशा कोई mediocre situation नहीं थी, कोई भी character mediocrity में express नहीं हो रहा था. It was the extreme level, contrasting traits में express हो रहे थे, या तो tall या तो dwarf, या तो round या तो wrinkled. So this was the first reason why he selected pea plant, that all the varieties have sharp contrasting characters. Now moving ahead to the second reason, it is annual plant. Annual plant completes its life cycle in 1 year. So it is annual plant, so it was easy to study several generations within a short span of time. A biologist cannot give much time span for conducting any experiment, क्योंकि फिर conclusion आते आते it will take a lot of time. So it is better कि हम experiment के लिए ऐसे organisms या ऐसे plants को select करें जो annual हो, जो अपनी life cycle short span of time में complete कर ले. So it is very easy for the biologist कि several generations को हम short span of time में study कर पाते हैं. So that was the other reason. Now the third reason is it has bisexual flower. Now bisexual flower का मतलब उसे pollinating agent की ज़रूरत नहीं है. It does not require any pollinating agent. It ensures self-pollination. Now the fourth one is large size of the flower. The flower size was quite large and it was easy to handle.
The other reason is large number of seeds were produced. Now large number of seeds are produced, so it helps in drawing clear conclusions. Suppose एक seed में कोई conclusion हम नहीं निकाल पा रहे हैं, so we have number of seeds available. So these were the reasons why Mendel selected pea plant. Now Mendel observed 7 pair of contrasting characters in pea plant. Mendel ने pea plant में 7 pair of contrasting characters observe किए थे, and this table is very important for you to observe that the first character he studied is height of the plant. And height of the plant के लिए दो trait थे, tallness and dwarfness. Tallness was a dominant trait and dwarfness was the recessive trait. Tallness को represent करने वाला allele is capital T and dwarfness को represent करते हैं with allele small t. Then the second character is seed shape. So for seed shape, the dominant the dominant trait was round, and round को represent किया जाता है with the allele that is capital R. And for seed shape, the recessive one is wrinkled seed shape. Wrinkled seed shape is represented by small r. Then seed color. For seed color, the dominant color is yellow, and yellow is represented by capital Y. Green is represented by small y. So the dominant for seed color is yellow, and recessive trait for green for seed color is green. Then flower color. Flower color के लिए जो dominant trait था was violet, and violet is represented by capital W, and white is the recessive trait which is represented by small w. तो अगर violet flower observe हो रहा है pea plant में तो dominant वाला express हो रहा है, और अगर white flower observe हो रहा है pea plant में तो means recessive trait अपने आप को. The next character is flower position. Now flower position के लिए dominant trait is axial, and that is represented by capital A, and the recessive trait is terminal, that is represented by small a. So this table is very important for all of you to learn, and we have to keep a check on किस character के लिए कौन सा trait dominant है और कौन सा trait recessive है. So it will help you to solve all the important questions. Now moving ahead, we'll talk about that based on these experiments, Mendel has conducted many experiments, and based on those experiments he gave the 3 laws of inheritance. And the 3 laws of inheritance is the first law, that is law of dominance, the second law, that is law of segregation, and the third law, that is law of independent assortment. Okay, law of dominance says when two homozygous individuals with contrasting pair of characters are crossed, the characters which appear in F1 generation are dominant, and those which do not appear in F1 generation are recessive. Now law of dominance is saying कि जब हम दो homozygous individuals जो contrasting characters possess कर रहे हैं उनकी crossing करते हैं, then जो characters हमें next generation यानी कि F1 generation में मिलती है, obtain होती है, that is known as dominant, and those which do not appear, that character is known as recessive. Now that will be understood using a monohybrid cross. So let's talk about the monohybrid cross first, and you will be able to understand कि actually law of dominance कैसे apply हो रहा है. Monohybrid cross is the cross in which we study the inheritance of only one pair of character. Now here in this cross, we are studying the inheritance of height of the plant. हम height of the plant का inheritance study कर रहे हैं, तो सिर्फ हम एक pair of character study कर रहे हैं, that is tallness and dwarfness. So when one pair of character is studied, then we call it monohybrid cross. So let's proceed. जो हमने parent plant use किए हैं, that is tall plant and dwarf plant, and हम उनकी crossing कराएंगे. Then we'll look at the results, the observations. So first of all, it is very important for you to know कि जो plants की हम crossing करा रहे हैं उन्हें हम parent generation मानते हैं, and parent generation की crossing के बाद जो first progeny obtained होती है, जो first offspring obtain होते हैं, उन्हें हम F1 generation या first filial generation बोलते हैं. We call them first F1 generation or first filial generation. Then after the self crossing of F1 की crossing के बाद the generation which is obtained, that is known as F2 generation or second filial generation. So I hope this much is understood. Now talking about law of dominance. Law of dominance stated that when two homozygous individuals, now look at this, capital T कैसी condition है, homozygous tall, and
हियर स्मॉल टी कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस, बट होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। when two homozygous individual with contrasting pair of characters, contrasting है, one is tall the other one is dwarf, homozygous condition में है। so when two homozygous individuals with contrasting pair of characters are crossed, इनकी क्रॉसिंग कराई गई, then the character which appear in F1 generation, जो character F1 generation में appear हो रहा है, that is dominant, and those which do not appear in F1 are recessive. Now abhi tak you understood that this is homozygous condition, two homozygous individual with contrasting pair, one is tall the other one is dwarf, उनकी crossing कराई गई। Now crossing means reproduce करने के लिए पहले organism gametes बनाता है, तो this capital T अलग and this capital T separate, then this small t separate and this small t separate, ये gametes बन गए। Now gametes का fusion होगा, you just remember one thing, that you have to do first with first one, then first with second one, so you'll get two, then first with the first, second with the first one and second with the second one, तो आपको चार combinations मिल गए। These are the four offsprings that you will get, and इस generation को हम F1 generation बोलते हैं। Now F1 generation में जितने भी हमें progeny मिल रही है, on the basis of genotype combination, just find out capital T small t। इसका मतलब क्या हुआ? This means that tall is there with dwarf, then which allele will be expressed? Tall अपने आप को express कर लेगा, dwarf वाला gene will not be able to express itself, तो ultimately phenotype क्या होगा? Based on this genotype, physical appearance कैसी आएगी? Tall plant होंगे, so all tall plants were obtained. Now अब further what will happen? Now just stop here only. F1 generation में आपको जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो था टॉल। So based on this, Mendel gave the law that when two homozygous individual with contrasting pair of characters are crossed, then the character which appear in F1 generation is dominant and which do not appear in F1 generation is recessive. F1 generation में यहाँ तक आपने cross workout किया and you came to know that यहाँ पे सिर्फ tall वाला character appear हो रहा है F1 generation तक, drop वाला नहीं express हो रहा है। So on this basis, टॉल को हम डोमिनेंट मान लेते हैं एंड ड्वार्फ को हम रिसेसिव कैरेक्टर मानते हैं। नाउ फर्दर वील मूव अहेड। नाउ F1 जनरेशन ऑब्टेन होने के बाद द सेल्फ क्रॉसिंग और सेल्फ पॉलिनेशन कराई गई इस F1 प्लांट की। नाउ यहाँ पे कोई और कॉम्बिनेशन के साथ उसकी क्रॉसिंग नहीं कराई जाएगी, सेल्फ क्रॉस करा दिया गया विद द सेल्फ वेराइटी कैपिटल T स्मॉल t विद कैपिटल T स्मॉल t, जो F1 जनरेशन में हमें ऑब्टेन हुए थे उनका सेल्फ क्रॉस कराया गया। देन अगेन क्रॉसिंग से पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ गैमीट्स का फॉर्मेशन मीन्स दिस कैपिटल T सेपरेट स्मॉल t सेपरेट, कैपिटल T सेपरेट स्मॉल t सेपरेट। नाउ further crossing के लिए we'll not do that open type of crossing, we'll use a device. Now this device is known as Punnet square or checkerboard. Now this is used to calculate or find out the possible gene combination, कि पॉसिबल ऑफस्प्रिंग में पॉसिबल जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा, मींस जीनोटाइप क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। एंड अल्टीमेटली जीनोटाइप के साथ साथ फाइनली जीनोटाइप क्योंकि फिनोटाइप डिसाइड करता है, सो दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अ चार्ट which is used for finding the possible combination of genotype as well as phenotype. So this is checkerboard, this is Punnett square. Now what we'll do कि यहाँ पे जो हमें gametes मिले थे, we'll place one pair of gamete here and the other pair of gamete this side. एक को horizontally, एक को vertically place करेंगे and now we'll start the crossing. Now capital T crossing with capital T, we'll have this combination, then the first one with this one capital T small t. Now this first line is done. Now we'll move to the second line. Now small t ka crossing with this capital T, this one will be obtained, and then this small t ka combination with this small t, then we'll get this combination. So ultimately we got the F2 generation. F1 generation की self crossing के बाद we got the F2 generation, and these are the gene combination capital T capital T, capital T small t, capital T small t and small t small t. Ultimately you'll write, now genotypes जो हमें मिले हैं, genotype का ratio देखने की कोशिश करें। This type of gene combination is only 1, so we'll write 1. Now this type of gene combination are 2, so we'll write 2. And this type of gene combination small t और कोई तो है नहीं, सिर्फ एक ही मिल रहा है, so we'll write 1. So the genotypic ratio is 1:2:1. Now moving ahead, we'll also have to deduce the phenotypic ratio कि उसका physical appearance के base पे ratio क्या आ रहा है।
So on this, can we say that this is tall because capital T है तो दोनों tall होगा. Now capital T small t तो यहाँ पे dominate वाला express कर जाएगा, tall होगा. Capital T small t में phenotype क्या होगा? Tall होगा क्योंकि small t express नहीं कर पाएगा, capital T express कर लेगा. Now here small t तो ultimately ये recessive gene था जो dominant की presence में अपने आप को express नहीं कर पा रहा था, but now it will express itself and यहाँ पे दोनों recessive है तो यहाँ पे character क्या आया? Dwarf. So now the phenotypic ratio is 3 tall is to 1 dwarf. So the phenotypic ratio is 3 is to 1 and the genotypic ratio for the monohybrid cross is 1 is to 2 is to 1. Now the whole cross, it's working and the ratio is very, very important considering the board's examination. Now there is another law, the law of dominance was proved till here. Now when we proceed further, we'll see that law of segregation is also proved by the monohybrid cross. Let's see what law of segregation speaks. Law of segregation says when a pair of allele are present together in heterozygous condition, when a pair of allele is present together in heterozygous condition, both remain together without mixing or blending and they separate or segregate from each other when they form gametes. So just again move to the monohybrid cross and let's see कि law of segregation यहाँ कैसे applicable हो रहा है. Till here law of dominance applicable था. Now what happened? हमने F1 की self crossing कराना start किया. So for F1 self crossing gametes, crossing से पहले gametes का formation होता है, वो organism gamete form करेगा. जैसे humans में reproduction से पहले sperm और ovum का formation होता है, जैसे वो gametes या sex cells होते हैं, ऐसे plant की body में ये gametes है. Now what will happen? जब ये gamete formation हो रहा है, just look at it. Law of segregation stated that when two heterozygous individuals, when two alleles are present in heterozygous condition, दो alleles present हैं heterozygous conditions में, so they remain together. Law of segregation stated that when a pair of allele are present together in heterozygous condition में अगर pair of allele present है means capital T small t is present together. So capital T small t together means heterozygous condition. When a pair of allele is present in heterozygous condition, then they remain together without mixing or blending. वो एक साथ रहते हैं without mixing or blending and they only separate or segregate at the time of gamete formation. वो सिर्फ एक दूसरे से अलग होते हैं gamete formation के time पे and when they are together, they remain together without mixing or blending means capital T and small t जब एक साथ exist कर रहे थे heterozygous condition में तो tall और dwarf एलील ने अपने कैरेक्टर्स में मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं करी. टॉल ने अपने कैरेक्टर को प्रिजर्व रखा एंड ड्वार्फ ने अपने कैरेक्टर को प्रिजर्व रखा एंड व्हेन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन वो सेपरेट हुए तो उन्होंने अपनी अपनी प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को मेंटेन किया. दैट इज व्हाई हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं. सो लॉ ऑफ segregation is also known as law of purity of gametes. Now I am again repeating law of segregation. When a pair of allele are present together in heterozygous condition, when a pair of allele are present together in heterozygous condition, both the alleles remain together without mixing or blending. Means उन्होंने अपने character में mixing या blending नहीं करी है. They have preserved their character and they separate or segregate only at the time of gamete formation. वो सिर्फ gamete formation के time पे separate या segregate करते हैं. So this is how Mendel proved the first law and second law using the monohybrid cross. So monohybrid cross helped Mendel to come up to conclusion for law of dominance and law of segregation. Now there is also a question in NCERT asking how Mendel's experiment showed that the trait may be dominant or recessive. So when Mendel crossed the tall variety of pea plant with the dwarf variety, only tall plants appeared in the F1 generation, but in F2 both appeared. F2 generation में both the characters appeared, tall appeared and dwarf appeared. Both appeared in the ratio 3:1. So Mendel called the tall trait based on these observations. He called the tall trait as dominant and dwarf trait as recessive. So this was all about law of dominance, law of segregation. Now moving ahead, we'll talk about the third law, that is law of independent assortment.
According to law of independent assortment, when two pair of characters are studied together, अभी तक हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक पेयर ऑफ कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे. नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट टू पेयर ऑफ कैरेक्टर. सो दिस मीन्स कि हमारा थर्ड लॉ किस पे बेस्ड होगा? It will be based on the dihybrid cross. So the third law of independent assortment states that when two pair of characters are studied together, inheritance of one character is independent of the inheritance of other pair of character. So just remember this, and we'll just try to observe it with the help of dihybrid cross. We'll observe it with the help of dihybrid cross now. This dihybrid cross you have to understand very properly because it's quite confusing. Just recall what the dihybrid cross said, that when two pair of characters are studied together, मतलब अब हम दो pair of characters को एक साथ study कर रहे हैं, means seed shape and seed color. Capital R, capital R, capital Y, capital Y. Round and yellow seeds were taken and crossed with green and wrinkled seed. So just remember, round and yellow seed were crossed with green and wrinkled seed. तो round is seed shape, yellow is seed color. तो यहाँ पे हम दो characters को एक साथ study कर रहे हैं. When we study the inheritance of two pair of character, then the inheritance of one pair of character is independent of the other pair of character. Now let's try and understand. Round and yellow seed को cross किया गया with green and wrinkled seed. So there are two characters we are considering. Now this is the parent generation जिसकी हम पहली बार crossing करा रहे हैं. So parent generation. Now they will start forming gametes क्योंकि crossing से पहले gametes बनना is very important. So now capital R, capital Y and capital R, capital Y. Don't get confused कि capital R one side and capital Y one side. Capital R, capital Y and capital R, capital Y, because हर एलील हर जीन कॉम्बिनेशन में एक पेयर कैरेक्टर का जरूर जाएगा. हर कैरेक्टर का एक एलील जाना जरूरी है. इन गैमीट्स वन एलील फॉर ईच कैरेक्टर शुड गो. और जब हम यहाँ दो पेयर ऑफ कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे हर गैमीट में दो एलील्स जाने चाहिए. Okay, so capital R, capital Y, capital R, capital Y. Now here small r, small y and small r, small y. Now again open crossing hogi. First one with the first one with the second one. Now second one with the first one and second one with the second one. Now what will we get? As in the monohybrid cross we were getting पूरा dominant वाला ही F1 generation में appear करेगा. तो round and wrinkled में it was round जो dominant था और yellow और green में it was yellow which was dominant. So round and yellow seeds होंगे सारे. With the genotype combination also you can say that capital R, small r, capital Y, small y में कैपिटल R और कैपिटल Y डोमिनेट कर जाएगा और राउंड और येलो सीड्स ऑब्टेन होंगे. नाउ इज वेयर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल. अब F1 की सेल्फ क्रॉसिंग कराई जाएगी. सो F1 जनरेशन की सेल्फ क्रॉसिंग हुई एंड नाउ गैमीट फॉर्मेशन में आपको दिखाई देगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ हियर अब जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा सो इट विल नॉट बी कि कैपिटल R कैपिटल Y के साथ आया था तो कैपिटल R कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन होगा. यहाँ पे 4 टाइप ऑफ गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड. Independent assortment होगा, independent combination होगा, means the inheritance of one pair of character is independent of the inheritance of other pair of character. It is not necessary that capital R capital Y का ही combination जाएगा gamete में. It can be capital R small y, small r capital Y, small r small y. So now let's see कि चार तरह के gametes कैसे बन रहे हैं. कैपिटल R कैपिटल Y जो पहले इनिशियली आ रहा था. देन कैपिटल R का कैपिटल Y के साथ कॉम्बिनेशन ऑलरेडी वी नो, बट नाउ व्हाट विल हैपन कि कैपिटल R का कॉम्बिनेशन स्मॉल y के साथ हो जाएगा. देन स्मॉल r का कॉम्बिनेशन विद कैपिटल Y हो जाएगा एंड फाइनली स्मॉल r स्मॉल y विच वी ऑलरेडी सॉ इन द पेरेंट जनरेशन. सो दिस इज हाउ कि यहाँ जरूरी नहीं है कि स्मॉल r स्मॉल y के साथ कंबाइन करेगा एंड कैपिटल R कैपिटल Y के साथ कंबाइन करेगा. द inheritance of one pair of character is independent of the inheritance of other pair of character. So दोनों तरफ gametes बन गए. Now again we will do the same thing with the help of Punnet square और checkerboard. हम एक parent की gamete इधर रखेंगे horizontally and एक parent के gamete vertically place करेंगे and we'll start crossing and get the genotype combination. So we'll write all the gametes here and then first line we'll pick and first line में crossing कराते हुए हम सारे combinations लिखते जाएंगे.
नाउ वन मोर थिंग कि जिस गैमीट का प्लेसमेंट जहाँ पर है हम वहीं पर उसको रखेंगे एंड वैसे ही उसकी प्लेसिंग करेंगे. देन फाइनली हमें ये 16 जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस मिल गए. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ जीनोटाइप कॉम्बिनेशन हम प्रिडिक्ट करेंगे फॉर सपोज दिस वन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. सो यहाँ पे राउंड होगा सीड शेप एंड येलो और ग्रीन में येलो डोमिनेट करेगा, सो राउंड एंड येलो हो गया. अब नाउ यहाँ पे अगर हम देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, सो दिस विल बी व्हाट राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे येलो है ही नहीं. Now here what will be the phenotype? Small r, capital Y, that will be यहाँ पे wrinkled and yellow. So can you see how different it is कि हमें अलग अलग combinations मिल रहे हैं. Now dihybrid cross में हमें 4 तरह के phenotypes मिल रहे हैं: round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green. सो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन हम ऑलरेडी पेरेंट जनरेशन में देख चुके थे, बट हमें 2 नॉन पेरेंटल भी नए जीनोटाइप कॉम्बिनेशंस मिले, फिनोटाइप कॉम्बिनेशंस मिले, एंड दिस वी हैव टू लर्न दैट 9:3:3:1 के रेशियो में राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन हमें कॉम्बिनेशन मिला. फिनोटिपिक रेशियो मिलता है 9:3:3:1. आउट ऑफ दी 16, 9 are round yellow, 3 are round green, 3 are wrinkled yellow and 1 is wrinkled green. So this you have to learn. And then genotype combination is very typical क्योंकि आप genotype एक एक combination के basis पे ratio निकालेंगे. So it's better you learn it, although it is not asked at 10th level, but still just for your information, it's 1:2:2:4:1:2:1:2:1. So you can say 12, 24, 12, 12, 1. Please don't consider it 12. Please don't consider it 24. It's not 12. It's not 24. Just as a trick, I'm telling that genotypic ratio is 12, 24, 12, 12, 1. With this trick, you can remember it. Otherwise, there is no 12. There is no 24. It's 1:2. It's 2:4. So phenotypic and genotypic ratio for monohybrid cross, the phenotypic ratio was 3:1 and genotypic was 1:2:1. For dihybrid, the phenotypic ratio is 9:3:3:1 and the genotypic ratio is 12, 24, 12, 12, 1. So after this, we'll move. And there was a question also where the NCERT asked how Mendel's experiment showed that the traits are independently inherited. So in dihybrid cross, although 2 characters combine in F1 generation, although they are combining in F1 generation, each character is independent. हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होता है असॉर्टमेंट के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, एंड इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. हमें ये अलग अलग कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से मिले. So I hope this much is clear. Let's proceed with the other part, and that is based on some questions. So there is a question which says if trait A exists in 10% population, अगर trait A 10% population में exist कर रहा है, कोई character है जिसका कोई ट्रेट है जो 10% पॉपुलेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज. नाउ दैट इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है. एंड ट्रेट बी दूसरा कैरेक्टर है जो 60% पॉपुलेशन में दिख रहा है. नाउ विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? I am explaining you the question properly. It says that एक asexually reproducing organism है, 2 characters हैं, एक character A 10% पॉपुलेशन में एक्सप्रेस हो पा रहा है और दूसरा कैरेक्टर बी 60% पॉपुलेशन में एक्सप्रेस हो रहा है. सो विच ट्रेट इज अराइजन अर्लियर? कौन सा ट्रेट पहले अराइज हुआ है, कौन सा बाद में एग्जिस्ट किया है? First of all, the thing to notice कि वो asexually reproducing organism है, and in the previous chapter, that is how do organisms reproduce, we have already discussed that variation is seen in sexual reproduction. Sexually reproducing organism में variation observe होता है. In asexually reproducing organism variation के chances बहुत कम होते हैं और sometimes होते ही नहीं है. So we can say that in asexual reproduction there are very less chances of variation. तो variation के chances बहुत कम होंगे. तो जो नया trait होगा यानी कि जो वेरिएशन आएगा वो वेरिएशन बहुत कम परसेंटेज में, बहुत कम प्रोपोर्शन में डेवलप होगा. तो इसका मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा ट्रेड वो ज्यादा पॉपुलेशन में होगा और जो बाद में उसका वेरिएशन डेवलप हुआ होगा वो बहुत कम पॉपुलेशन में आया होगा. सो बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन, सो द न्यू ट्रेड विल डेवलप इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन. तो पहले कौन सा आया? द ओरिजिनल ट्रेड, दैट इज इन 60% पॉपुलेशन. सो ट्रेड बी इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, नॉट ट्रेड ए. I am repeating it.
एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं. सो जो नया ट्रेट होगा, वेरिएशन हमेशा बाद में आता है. जो ओरिजिनली एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है उसमें कुछ म्यूटेशन हुआ तो वेरिएशन आ गया. सो पहले जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा होगा वो ज़्यादा पॉपुलेशन में आएगा, ज़्यादा पॉपुलेशन में एक्सप्रेस होगा. एंड जो वेरिएशन होगा, क्योंकि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है तो उसमें हमेशा चांसेस बहुत कम होते हैं वेरिएशन के. सो द न्यू ट्रेट विल डेवलप इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन, और जो पहले से जो चला आ रहा है द ओल्ड ट्रेट दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. सो ट्रेट बी इज द ओल्ड ट्रेट और द ओल्ड कैरेक्टर जो पहले से प्रिवेलेंट है, दैट इज ट्रेट बी हैज अराइजन अर्लियर. और बाद में कौन सा वेरिएशन आया, वो ट्रेट ए था जो बाद में एक्सप्रेस हुआ, क्योंकि वो बहुत कम परसेंट पॉपुलेशन में एक्सप्रेस हो पा रहा है. Now another question, give the pair of contrasting trait and state dominant or recessive. Now there is a contrasting trait जो आपको दिया है, इसका दूसरा pair आपको बताना है, and you have to also tell कि whether it is dominant or recessive. तो yellow seed का contrasting pair है the green seed. Yellow color seed का contrasting pair is green seed. Now you have to tell whether it is dominant or recessive. तो yellow is dominant and green color is recessive. Now round seed, that is seed shape. तो seed shape, round seed shape के लिए contrasting trait is wrinkle seed shape, जिसमें round is dominant and wrinkled is recessive. Now let's talk about another question. In human gene for black hair, human में gene for black hair is capital B and brown hair is small b. Now what will be the hair color of the following genotypes? You have already been told कि capital B के लिए black hair के लिए capital B is there, brown hair के लिए small b is there. So now genotype combination के basis पे you have to tell which what will be the phenotype. कैपिटल बी क्योंकि बी ब्लैक हेयर के लिए कोड कर रहा था, सो वील गेट ब्लैक हेयर क्योंकि दोनों डोमिनेंट है. देन स्मॉल बी तो यार स्मॉल बी वाज कोडिंग फॉर ब्राउन हेयर, तो यहाँ पे ब्राउन हेयर हो जाएगा. नाउ कैपिटल बी स्मॉल बी, सो कैपिटल एंड स्मॉल से यू विल अंडरस्टैंड कि क्योंकि कैपिटल वर्ड हमेशा हम डोमिनेंट जीन के लिए लेते हैं एंड स्मॉल हमेशा हम रिसेसिव के लिए लेते हैं, तो ब्राउन एंड ब्लैक में कौन डोमिनेट करेगा, द ब्लैक हेयर विल डोमिनेट. सो दिस इज ब्लैक हेयर, बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, सो हेट्रोजाइगस ब्लैक. एंड एट द लास्ट पुनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या चार्ट है जिसके थ्रू हम पॉसिबल जीन कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, दैट इज जीनोटाइप पता चलता है, एंड जीनोटाइप की बेसिस पर ही हम फिनोटाइप एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.